दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। We are starting with Henry Main's study on the evolution of law. But before that, let me remind you about the previous class. We discussed in the previous class historical theory of jurisprudence propounded by Carl von Savigny. And he stated that the law is a byproduct of common consciousness of the people, general spirit of the people, which is known as Volksgeist. तो ये उनका एक पर्सपेक्टिव है. Law lies in the general spirit of the people. It grows like a language. It grows with the growth of the community. It gains strength from the community itself, and finally it dies with the disintegration of the nation. But this historical jurisprudence is one-sided because the approach is very pessimistic and cold towards the codification of law, and therefore this is one-sided approach, we can say that. So this theory was later on completed very well by first his disciple Puchta, Puchta. We're not going to discuss Puchta here because a lot of excesses in that theory was made by Carl von Savigny and those were required to be removed. But actual work in that regard was done by Sir Henry Maine. So it is important for me to be able to discuss the theory of Henry Maine. He belongs to a historical school of jurisprudence, and we can also say that he belongs to the anthropological school of jurisprudence. Let me introduce Henry Maine with you. Henry Maine, his time period is 1822 to 1888. 1822 to 1888. Sir Henry Maine's theory of evolution of law came after the theory of Sir Carl von Savigny. So Henry Maine made a very valuable contribution in the sense that he made a comparative study of legal institution of various communities and laid down theory of evolution of law. So he also took into account the various legal institution of the communities, various communities. His method was a great improvement upon historical school of jurisprudence, which was propounded by Sir Carl von Savigny. And since he improved historical jurisprudence, that yielded a lot of fruitful results. As I told you, that Maine made a very valuable contribution to legal philosophy by the way of historic comparative method. His method was also comparative method, but historic comparative method. He was a very erudite scholar of law. He started his career as a professor of civil law in the University of Cambridge in a very early age of 25 years. He was a professor of civil law in the age of 25 years. बहुत बड़ी बात है, that too in a Cambridge University. He was law member in the Council of Governor General of India between 1861 to 1869. बहुत बड़ी बात है. British Empire took over from East India Company in 1858, and in 1861 itself, Henry Maine became a member of Governor General in Council in India. And when he came to India, that provided him an opportunity to study the Indian legal system. He went back to England in 1869, and from 1869 to 1877, he occupied a chair of historical and comparative jurisprudence in Corpus Christi College, which is in Oxford University. After that, he held a distinguished post of the Master of Trinity Hall, again in the Cambridge University. So he died in 1888. That is his contribution to the legal thought. His famous works, note down, Ancient Law, Village Community. Village Community is also a very celebrated work of his. Then came Early History of Institutions. This is also a very important work. Dissertation on Early Law and Customs. Another work is Dissertation on Early Law and Customs. So these are some of the important contribution of Sir Maine in the study of law. So he made that contribution to the legal thought and legal philosophy. Now let us quickly discuss his theory of jurisprudence. But before that, I give a pause of only 1 minute. Carl von Savigny tells you about the two stages of development of law. That first stage is that law develops spontaneously.
it comes out of customs. And in the second stage, when law becomes complicated, it is developed by jurists. And legislatures have no role to play in the development of law because they only codify the law which is already there. But Henry Maine tells you about the stages of development of law, and he says that there are 4 stages of the development of law. Now let's talk about the first stage. In the first stage, he says that law made by the ruler under the divine inspiration. So in the beginning, law was made by the commands of the ruler, believed to be acting under the divine inspiration. That is the first stage of the development of law. And he gives the example of the inspiration by Themists in the Homeric poem. I don't know what is this. It must be some literature which may be found in Roman Empire. We don't know that. In the second stage, the commands of the rulers, जो अभी मैंने आपको बताया, जो commands rulers की थी, जो divine inspiration से जो commands मिली थी, that command crystallizes into customs. That command crystallizes into customary law. पहले तो law आ रहा है divine inspiration से आ रहा है फर्स्ट स्टेज में. सेकेंड स्टेज में क्योंकि वो डिवाइन इंस्पिरेशन से लॉ है तो वो लॉ बन गया. तो कैसे बना? वो लॉ कस्टम बन गया. बार बार तो भगवान आपको कमांड नहीं देगा, बार बार भगवान इंस्पिरेशन देगा नहीं कानून बनाने की. सो दैट command of the rulers which came from the divine inspiration, that crystallized into custom. Then in the third stage कौन सी है? In the third stage, knowledge of law goes into the hands of the priests. So the knowledge and administration of customs goes into the hands of the priests. It is a minority. Priest is always in the minority. So the law goes into the hands of the minority, usually of a religious priests. They are priests of the religious nature. And in this stage becomes very weak. The state becomes very weak. Because state is the original lawmaker. And since that weakens in the third stage, knowledge of law goes into the hands of the priest. और वो हमने देखा भी था. मैंने आपको जब मैं नेचुरल लॉ फिलोसफी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि द नॉलेज ऑफ लॉ गोज इनटू द हैंड्स ऑफ द प्रीस्ट्स बिफोर द रेनेसांस पीरियड, इफ यू रिमेंबर दैट. सो दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लॉ. नाउ वी कम टू द फोर्थ स्टेज. फोर्थ स्टेज इज ऑफ द कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ. और याद रखिए, कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ एंड लॉ मेकिंग इन द पार्लियामेंट is not one and the same thing. याद रखिएगा. Codification is not always legislation, because legislation always happens in the parliament, whereas codification can happen anywhere. It can be done by the dictator. It can be done by somebody who wants to rule the country. He may not have a power. Even army person can make a codification of law, like Napoleon had done it. He gave a civil code to France. We know that, which is known as pattern also. So codification is not always a legislation. So in the fourth stage is of codification. So when this era of codification comes, this makes the law certain. One thing about codification is that it makes the law certain. Now law is promulgated in the form of a code. जैसे कि आपको कई सारे कोड्स मिलते हैं. रोमन एम्पायर में भी कई सारे कोड्स मिलते हैं. सोलन एटिक इज ऑल्सो वन ऑफ द कोड्स. उसके बाद आपके पास 12 टैबलेट्स नाम की एक कोड भी है, विच वॉज फाउंड इन रोम. तो ये कोड थे, बट ये लेजिस्लेशन नहीं थे. डोंट कंफ्यूज द कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ विद द लेजिस्लेशन. यस, लेजिस्लेशन इज ऑल्सो कॉडिफिकेशन, बट ऑल codification is not legislation. Legislation is codification, but all codification is not legislation. Now, please remember one. These are the 4 stages of law, but is it possible that we can go beyond this fourth stage also? Can we develop a law even beyond these 4 stages, which I have already mentioned with you? Ajay ji? Yes, sir. I think we can, because actually if you look at the society today, there are a lot of events which are happening. See, basically law is also result of the activities and the events which take place in the society. So in a way, law can also be said to be an impression of society's behavior. Now, just as the way the society's behavior is changing and evolving, both in negative term and in positive term, so much so is the law in terms to dealing with the impact of it on the society per se. So in that sense, yes, law is a very dynamic concept, and accordingly, yes, I think
given the 4 stages which you So just you described. you say that it can be developed even beyond these 4 stages. Correct. For that purpose, we'll also have to evolve new methods, right? Correct. पुराने मेथड से तो आप नहीं डेवलप करेंगे, नहीं. है ना? Correct. So these are the four stages of the development of law. First is law comes in the form of command given by the ruler, and these commands developed by the ruler under the divine inspiration. And those divine inspirations, those commands came out of divine inspiration, gets crystallized into customs in the second stage, and that knowledge of law goes into the hands of the priests in the third stage because state becomes weak. And in the fourth stage, law gets codified. But again, I had told you that codification and legislation is not one and the same thing. I'll come back to that point. क्योंकि legislation एक बिल्कुल अलग method है law development का. That is a very different method. क्योंकि उस पे law पे debates होती हैं, discussions होता है, parliament में पूरी committees होती हैं, law को discuss. वो एक बिल्कुल different method है. लेकिन codification can be arbitrary also. But legislation is never arbitrary, right? So next point of Sir Henry Maine is that the societies which do not progress beyond the fourth stage, which closes the era of development of law, spontaneous legal development of law, they are known as static societies. तो 4 stages बताई development की, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो societies चौथी स्टेज के बाद अपने लॉ को डेवलप नहीं करती, they are static societies. And the societies which go on developing their laws beyond that fourth stage by adopting new methods are known as progressive societies. So, static societies do not grow beyond the fourth stage, but progressive societies go on developing their laws by adopting new methods. Now, progressive societies develop their laws by 3 methods. Progressive societies develop their laws by adopting 3 methods. वो 3 methods कौन-कौन से नोट कर लीजिए. First, legal fiction. What is legal fiction? Have you heard about legal fiction? So legal fiction basically means the fiction which is recognized by the law akin to a reality. Exactly. One Like of them we had discussed in a torts class also. Yes. So a company is the best example of legal fiction in the sense that even though it is not existing in flesh and blood, yet for all practical purposes it is considered as a legal entity. Yes. First, legal fiction. Second method is equity. You develop a law on the basis of equity. Equity is a principle of natural law, you know that? Huh? Equity, justice, good conscience. Huh? In fact, right to equality under Article 14 of the Constitution stems from that principle of equity, right? And the third method by which the progressive society developed their law is legislation. And legislation is a law making in the parliament, you know that. So legal fiction changed the law according to the changing needs of the society without making any change in the letter of the law. देखिए, लीगल फिक्शन में लेटर ऑफ द लॉ चेंज नहीं होता है, सोसाइटी भी चेंज नहीं होती है, लेकिन क्योंकि लीगल फिक्शन एक मेथड है लॉ डेवलपमेंट का, तो लॉ डेवलप होता रहता है. सो देयर आर इन्यूमरेबल एग्जांपल्स ऑफ द लीगल फिक्शन in English and Roman law also. We are not going to discuss much about it here. Second method of the development of law is equity. And equity consists of those principles which are considered to be very sacred, very well established principles. They are invested with a higher sacredness than those of the positive law. Positive law से काफी ज्यादा sacred है principle of equity, क्योंकि रोमन लॉ में भी आप पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल 14 of our constitution stems from the principle of equity. It is used to modify the rigor of law. इक्विटी क्या करती है? जो लॉ होता है काफी रिगरस होता है, and it modifies the rigor of law. And third method of development of law is legislation. मैंने बताया आपको. Legislation is a last thing. It comes in the last, which is perhaps the most direct method, most systematic method of lawmaking or the development of law. Legislation is the most direct source of developing the law, most direct method of developing law. So I give a pause here of 1 minute and I'll get back to you. Now, as to the legal conditions prevailing
at the end of general course of evolution of law, that means of स्टैटिक सोसाइटीज. दो टाइप की सोसाइटीज बताई थी मैंने आपको. बताया था एक स्टैटिक सोसाइटी होती है जो कि चौथे स्टेज के बाद अपने लॉ को नए मेथड से डेवलप नहीं करती. तो जहां पे ये स्टैटिक सोसाइटी है वहां पे जो कानून होता है वो होता है स्टेटस के हिसाब से वर्क करता है. और ये स्टेटस प्रोग्रेसिव सोसाइटी में डिसइंटीग्रेट कर जाता है. आपको मालूम है जब फोर्थ स्टेज आया डेवलपमेंट ऑफ लॉ का, कॉडिफिकेशन शुरू हुआ इंग्लैंड में भी या यूरोप में भी, आपने देखा होगा society was very feudalistic in nature. Even in India, society was feudalistic in many sense in India. Have you heard about it? Yes, sir. Basically divided into princely states, Raja, Maharaja, kind of. Exactly. And then family का अपना status होता था. family में कर्ता का जो status होता था वो अपना होता था. अलग status होता था. हर किसी का अलग status होता था. लड़के का status family में अलग होगा, लड़की का अलग होगा, wife का अलग होगा, सास ससुर का स्टेटस अलग होता. तो स्टेटस के हिसाब से पूरा पर्सनल लॉ में लॉ बनते थे उस समय. सो इन द स्टैटिक सोसाइटी दैट कंटिन्यूज, बट इन द प्रोग्रेसिव सोसाइटीज दैट स्टेटस डिसइंटीग्रेट्स. सो इन द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी इज डिपेंडेंट ऑन हिज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर group in the community. For example, the rights and duties of an individual in the family that depends on his being a pater familias or a dependent. अगर dependent है तो उसकी rights and duties अलग होंगी. हाँ, करता है तो उसकी rights and duties अलग होगी. हाँ, so वो जो है वो depend करेगा उसका status, law बनेगा उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग. फैमिली में, कम्युनिटी में उसका क्या स्टेटस है, फैमिली में क्या स्टेटस है. तो स्टैटिक सोसाइटी में तो हमेशा स्टेटस के अकॉर्डिंग ही लॉ बनता है. बट इन द प्रोग्रेसिव सोसाइटीज द आइडिया ऑफ स्टेटस डिसइंटीग्रेट्स. आइडिया ऑफ स्टेटस जो होता है ना प्रोग्रेसिव सोसाइटी में वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है. देयर इज अ ग्रेजुअल डिसोल्यूशन ऑफ अ फैमिली डिपेंडेंसी एंड द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल ऑब्लिगेशंस कम्स एट इट्स प्लेस. हर की मतलब फैमिलीज इंडिविजुअलिस्टिक बनती है. आप यूएस में देख लीजिए, यूएस और ब्रिटिश सोसाइटी उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है. जैसे ही बच्चा 15-16 साल का होता है ही स्टार्ट्स अर्निंग. हाँ, फैमिली को उससे कोई लेना देना फिर नहीं होता है. और उसके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं फैमिली के लिए वो जो होते हैं वो तो होते हैं, बट अदरवाइज वो फैमिली का हिस्सा फिर बहुत ज्यादा नहीं होता है बिकॉज इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है पूरा मामला. इंडिविजुअल अब हमारे भी इंडिया में boys and girls, women, they all are doing jobs after particular time. और since they are earning, उनका status अलग हो जाता है फैमिली, क्योंकि फैमिली itself becomes individualistic in nature. Otherwise हमारे यहाँ पे फैमिली एक यूनिट होती थी ना, तो वो स्टेटस जो है, पुराना जो स्टेटस है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है. अभी वो स्टेटस नहीं है पुराना वाला. डू यू अग्री विद दैट? तो वो फैमिली डिपेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिसॉल्व हो रहा है धीरे धीरे. ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन आ रहा है उसके जगह पे. द इंडिविजुअल इज स्टेडीली सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फैमिली एज द यूनिट ऑफ विच सिविल लॉज टेक्स अकाउंट. आपने देखा होगा एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी बना है. वो क्यों बना? क्योंकि फैमिली डिपेंडेंसी खत्म हो गई. फैमिली डिपेंडेंसी क्या होता था सबका, सब एक फैमिली यूनिट्स के पार्ट है, सब एक फैमिली के लिए काम कर रहे हैं. फार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी. फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तो फार्मिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई और सिविल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ी चीज हो गई बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट. एवरीथिंग बिकेम डिपेंडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट. वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच क्या था? कॉन्ट्रैक्ट. टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. एवरीवेयर यू फाइंड कॉन्ट्रैक्ट. अर्लियर वी हैड गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. गुरु का अपना स्टेटस होता था, वो स्टेटस अब है क्या? कमर्शियलाइजेशन हो गया. तो कमर्शियलाइजेशन में क्या होता है कि स्टेटस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है. सिर्फ प्रणाम गुरुजी बोलने से आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते. हाँ, वो उसका स्टेटस ही खत्म हो गया. नाउ ग्रोथ ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रेजुअली डेवलप्स. सो क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ पैटर फैमिलियर्स, जो फैमिली डिपेंडेंट का जो सिचुएशन होता था, दैट विदर्स अवे, क्योंकि खत्म हो जाता है ना, वो फैमिली डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो पैटर फैमिलियर्स क्या करेगा? उधर जो स्लेव होते थे दे ऑल्सो गेट मोर एंड मोर फ्रीडम, क्योंकि स्लेवरी खत्म हो गई.
जिसके पास ज्यादा स्लेव्स उसका स्टेटस बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा पहले होता था. बट नाउ slavery also gets disintegrated and slaves get more and more freedom. And now rights and obligations depend on contract or free negotiations of the individuals. तो राइट्स और ड्यूटीज जो लोगों की थी वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड होता था. अगर आप किसी से काम ले रहे हैं तो उसका राइट है कि वो आपसे प्रॉपर वेजेस ले, और आपकी ड्यूटी है कि आप उसको वो प्रॉपर वेजेस दें. तो ये जो पूरा लॉ बनने लगा वो राइट्स एंड ड्यूटीज के बेसिस पे बनने लग गया, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड होता था या फ्री नेगोशिएशंस पे डिपेंड होता था, free negotiations of the individuals. So Henry Maine traced the course of development of law like this, and then he gave a very important thesis. इस thesis को जरूर आप नोट कर लीजिए. His thesis is that the movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract. अभी तक की जो मूवमेंट है प्रोग्रेसिव सोसाइटी की, दो टाइप की सोसाइटीज बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. स्टैटिक सोसाइटीज जो कि चौथे स्टेज के बाद लॉ को नए नए मेथड से डेवलप नहीं करती, और एक और है आपकी प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो डेवलप करती रहती है अपने लॉज को नए नए मेथड्स से. उन्होंने 3 मेथड्स बताए भी हैं. कौन कौन से हैं वो 3 मेथड्स? लीगल फिक्शंस, इक्विटी एंड लेजिस्लेशंस. हाँ, तो ही सेज जो अभी तक की मूवमेंट रही है प्रोग्रेसिव सोसाइटी की वो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ी है. द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिदरटू बीन a movement from status to contract. So that thesis of the Henry Maine was true during his own time. His thesis was perfectly right when he propounded this thesis. Apart from the instances from ancient Roman law, during his own time, he saw the emancipation of individual from status in England and also in the continental Europe. वहां पे भी status धीरे धीरे disintegrate हो रहा था. यूरोप में या इंग्लैंड में भी स्टेटस डिसइंटीग्रेट हुआ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. इन इंग्लैंड द पोजीशन ऑफ मैरिड विमेन इंप्रूव्ड. आपको मालूम है महिलाओं का तो कोई स्टेटस होता नहीं था, ना इंडियन सोसाइटी में ना यूरोपियन सोसाइटी में. तो फिर क्या हुआ? मैरिड विमेन का स्टेटस वहां पे इंप्रूव हुआ. हाँ, क्योंकि मैरिज अब रिलीजन के बेसिस पे नहीं ना, अब तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होने लग गई. मुस्लिम लॉ में तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट था मैरिज. हिंदू लॉ में जब डिवोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1955 में, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट बना. उसमें पार्टली कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टली सेक्रामेंट है ना, इंडियन मैरिज, हिंदू मैरिज है ना रोहित? यस सर. सो देयर वर मेनी सिविक डिसेबिलिटीज ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन दैट वर रिमूव्ड बाय स्टैट्यूट्स. रेनेसांस के पीरियड के बाद जितनी भी सिविक डिसेबिलिटीज थी वो धीरे 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 रिमूव कर दी गई रिलीजन के ग्राउंड्स पे. अगर इंग्लैंड में कोई मुस्लिम चला जाता था, हिंदू चला जाता था या कोई भी और चला जाता था, इवन कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट को मानते नहीं थे तो उनको राइट्स नहीं थे. तो ये जो डिसेबिलिटीज थी, सिविल डिसेबिलिटीज ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, दैट वर रिमूव्ड इन इंग्लैंड. मोर फ्रीडम वाज गिवन टू सर्वेंट्स टू मेक कॉन्ट्रैक्ट. सर्वेंट्स के पास पहले फ्रीडम थी ही नहीं, जो उनको उनके एम्प्लॉयर्स देते थे वो उनको लेना पड़ता था. बट अब उनको फ्रीडम मिल गई कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नेगोशिएशंस कर सकते हैं सर अपने एम्प्लॉयर्स के साथ. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्न्ड मेनी पेजेंट कम्युनिटीज इनटू एन इंडस्ट्रियल प्रोलिटेरिएट क्लास, एंड दिस इंडस्ट्रियल प्रोलिटेरिएट क्लास हैड फ्रीडम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयर. ये वर्ड सुना है आपने रोहित? प्रोलिटेरिएट फ्रेंच वर्ड है ना, हैव एंड हैव नॉट्स वाली बात थी वो. इंडस्ट्रियल प्रोलिटेरिएट्स जो थे वो हैव नॉट्स थे, उसको हिंदी में कहते हैं सर्वहारा वर्ग. यही है ना वर्ड? तो ये जो इंडस्ट्रियल सर्वहारा वर्ग है उसके पास चॉइस थी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयर्स. एंड हेनरी मेन आल्सो विटनेस्ड द ट्रायम्फ ऑफ द इंडस्ट्रियल नॉर्थ व्हिच वाज अ कम्युनिटी मोर बेस्ड on the free contract over the agricultural and feudal south, which was more favoring the slavery at that time. So since it favoring slavery, it was favoring status. It wanted to retain the institution of slavery. तो हेनरी मेन ने देखा कि जो नॉर्थ है जो कि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे था, उसने साउथ पे जीत प्राप्त की, उसने स्लेवरी को खत्म करवाया. वहां पे अमेरिकन सिविल वॉर हुआ उसके लिए पूरा एक, वो हेनरी मेन के ही टाइम पे हुआ 1860s में. So these all made him to come to the conclusion that progressive societies moves from status to contract. So his theory was good, but this theory no longer holds good.
individual freedom of contract gets curtailed. आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, क्या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करने का फ्रीडम है? अजय जी, मैं आपसे ही पूछता हूँ ये क्वेश्चन। हाँ जी सर। एक इंडिविजुअल के पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का कितना फ्रीडम है? सर देखिए, as long as the party is capable, free consent is available, number one. Number two, there is no undue coercion, misrepresentation or external factor compelling the party to either enter or not to enter a contract. In that sense, the party can contract. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कॉन्ट्रैक्ट में फ्री नेगोशिएशन का कोई रोल ही नहीं है, then will you agree with that? No, I will not, because actually You will not. Now let me give you an example. Okay. Suppose you want to sell your house for rupees 1 crore and 50 lakh. You give me an offer. You give me an offer of selling your house for rupees 1 crore 50 lakh. But I want to negotiate with you and say that no, I can pay you 1.4 crore rupees. Okay. Please use your house, but you don't negotiate. You say, no, this is a counter offer and I do not accept it. I don't want to negotiate. Correct. Huh? Where is that free negotiation? You're not negotiating with me. Suppose you're an employer. I want to take employment in your firm and you offer me salary of 20,000 rupees per month. And I say, no, this is too less. I want at least 30,000. You say, no, I don't want to negotiate. So, देखिए, this is a very subjective approach in the sense that, Sir, look at the Contract Act. Look at the Indian Contract Act 1972. It never saves the right of free negotiation of the individual in contract. Do you agree with that, Rohit? Yes, it's not mentioned anywhere. Then where is that free negotiation? The moment you give a counter offer, contract closes, yeah. Sir, but then can't we argue that the counter offer itself is an example of free negotiation? भाई आप मेरे को एक चीज ऑफर कर रहे हो, मैं उसके बदले आपको एक दूसरा ऑफर दे रहा हूँ। लेकिन है तो एक तरीके से वो भी फ्री नेगोशिएशन। हाँ, है तो फ्री नेगोशिएशन, लेकिन उस नेगोशिएशन को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलाउ ही नहीं कर रहा। सर, बट अगर मैं फ्री नेगोशिएशन का जो राइट है ना, उसको कर्टेल कर दिया ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, 1870s में ही कर्टेल कर दिया। Where is that right to free negotiation in the Contract Act? Sir, can I say something extra? Yeah, sure. देखिए, whenever a contract is discussed, it is basically between two principals, right? And a contract is not concluded till both the free principals they conclude to a same mind, right? So in that sense, till the time a contract, even if it does not come into the shape of an agreement, anything which is discussed is in a way a free negotiation. No. See, this idea of free negotiation is very flawed one. Why I'm saying this? If you have a house, the moment you say, no, I don't want to sell this to the so and so price, and you don't want to discuss it, there cannot be free negotiation. You can discuss some modalities during the discussions, but the free negotiation to negotiate the price is always remains with the influential person who is in more power, right? I mean, forgive me for saying this, but I still feel that it's a very gray area. This is something which cannot be very, strictly and purely defined as white and black. Why? No, it can still be defined, but even attempts were not made. Nobody made that attempt. Even that free negotiation was somewhat available in labor law, and that has also been destroyed now. Even it was destroyed by the Indian Parliament, very knowingly, very willingly. And that is why I'm saying that Henry Maine's theory was good in his time, but his theory no longer holds good. He says that individual freedom of contract curtailed. So there was a counter move, the signs of which were apparent during Henry Maine's own time. It was realized that idea of freedom of contract between a powerful capitalist and a starving workman is a ridiculous idea. It is a hollow thing to even imagine that there is a freedom of contract between haves and have-nots, between starving workmen and powerful employees. नहीं हो सकता. The organizations to protect the workmen came into existence. The employers also formed their associations. आपको इसीलिए association का right दिया गया है under the constitution, क्योंकि idea of free contract कुछ होता ही नहीं है सर. Under article 19(1)(d) या E में right to form association है, वो इसीलिए है because it was realized कि there can never be an idea of freedom of contract. Now, in place of individual bargaining,
or in place of individual freedom of contract, there came a group bargaining. Apart from this, a lot of social legislation has been passed which have fixed minimum working hours of the workmen and maximum wages. It had laid down the rules regarding compensation and other condition of service, and the individual is bound by these rules. है ना? मिनिमम वर्किंग आवर्स का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, मैक्सिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, वो क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का जो आइडिया था वो बिल्कुल फ्लॉड आइडिया साबित हुआ सर। और ये आज की बात नहीं है, ये 100 सालों से ऐसा आराम से लोगों को समझ में आ गया कि फ्री कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता नहीं है। चेंजेस इन द कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट हैव आल्सो हैपेंड। नाउ देयर हैव बीन ग्रेट चेंजेस इन द कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। पहले क्या था? पुलिस स्टेट था स्टेट, आज क्या है? वेलफेयर स्टेट है। And this has caused a growing interference of the state into the activities of the individual. How that is done? That is done by controlling economy by the state. Even the contracts which an individual enters into in everyday life have been standardized. They are known as contract of water. आपको पानी चाहिए घर में, वाटर सप्लायर से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या आप फ्रीली नेगोशिएट करते हैं अजय जी? चलिए बताइए आप मुझे। नहीं सर, वो तो सारा गवर्नमेंट ही डिटरमाइन। हाँ, क्योंकि वो टर्म्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिटरमाइन कर दी है, आपके पास कोई राइट नहीं है। बट देन उसमें सर देखिए, एक चीज मैं फिर एक कैविएट डालूंगा कि गवर्नमेंट इज बेसिकली माय रिप्रेजेंटेशन एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड गवर्नमेंट एक अपने अंडर ही बनाई हुई अथॉरिटी को मेरे को छोड़ दीजिए, बाकी जगह पे आपके रिप्रेजेंटेशन का फायदा गवर्नमेंट आपको दे रही है या कंपनीज को दे रही है? सर वो तो फिर देखिए दैट वे बात वही है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट आपके फेवर में कहाँ है? एक तो आपको राइट नहीं है और दूसरा स्टेट उसको स्टैंडर्डाइज कर दे रही है किसी और के फेवर में। बात तो वही हुई ना, कुछ है ही नहीं आपके पास। कॉन्ट्रैक्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरेज विद अ रेलवे कंपनी, कुरियर सर्विस से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? जितना मांगा आपको देना पड़ेगा। नहीं, हमारी कंपनी की यही पॉलिसी है। वो तो यही बोलते हैं सीधे, हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है, आपको सर्विस लेनी है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। सर ये तो फिर एक ओपन क्या कहते हैं चीज हर जगह है। हाँ, वही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह जो है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऑप्शन है ही नहीं, फ्री नेगोशिएशंस का कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, बिकॉज द इंडिविजुअल कैन नॉट चेंज एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Parties entering into these contracts as members of the social class and not as an individuals. In modern times, contract between government departments and private firms have become very, very important, which also are standard contract. And the terms of the contract are fixed beforehand. The progressive opinion in every country is in favor of nationalization of industries and services. इसीलिए 1970s में हमारे यहाँ भी काफी नेशनलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन हुआ, स्पेशली बैंक्स का तो पूरा नेशनलाइजेशन हो गया। अभी अब दोबारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो एक अलग बात है। द फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज thus being curtailed in everyday life. Theory has no place in the totalitarian states. Note down, totalitarian states like North Korea, etc. Henry Maine himself qualified his theory by saying that it has an application in progressive states. So totalitarian states, in the totalitarian states, there has been a strong shift to the status again. In these countries like North Korea, no contract is allowed which is in any way not in the consonance with the state plan, or it is otherwise harmful to the society. आप चाइना में देखिए, चाइना में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर ही नहीं सकते जो कि स्टेट प्लान के अगेंस्ट हो या सोसाइटी के अगेंस्ट हो। यहाँ पे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इनफैक्ट हमारी सरकार ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर बैठती है जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट हो। भोपाल गैस ट्रेजेडी उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यूनियन कार्बाइड कंपनी के अगेंस्ट इन्होंने कोई सेफगार्ड रखे ही नहीं थे, कितने लोग मर गए। From these observations and from these examples, one may gather that the societies have not remained progressive every time, according to Henry Main's theory, but have become retrogressive also. आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ नेशनलाइजेशन से हम दोबारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है, कम नहीं किया है, खत्म कर दिया। But Henry Maine himself qualified his statement by the use of the word hitherto, यानी कि अभी तक जो मूवमेंट था वो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ था। आगे क्या होगा इसके बारे में तो कोई नहीं कह सकता, हेनरी मेन ने भी नहीं कहा। तो उसकी थ्योरी वैसे गलत नहीं है। His theory was true during his own time and it was rather an echo
of the individual's development and the formation of a capitalistic state or capitalistic class which demanded freedom of contract and freedom of labor. There is yet another limitation of Henry Maine's theory, which he himself mentioned also, that this theory is not meant to apply to the totalitarian states. And this theory also does not apply to the personal conditions imposed otherwise than by natural incapacities. Henry Maine's view is correct in one sense, that the trend of legislation in the countries which are undeveloped is still to remove those personal disabilities which arise due to the membership of class, that is status. कई countries आज भी status से contract की तरफ move करने की कोशिश कर रही हैं, जो छोटी छोटी countries है, underdeveloped countries है, तो वहां पे अभी भी हेनरी मेन की थ्योरी सही है, ऐसा नहीं कि हर तरफ गड़बड़ा गया है सब. हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 एंड सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 are a very good example of how personal disabilities of women have been removed by the statute. In the same way, labor laws, मैंने labor law का example आपको पहले ही दे दिया, and land laws which were passed during recent years have helped in emancipation of workmen and peasants. हालांकि लैंड लॉज को अभी चेंज करने की कोशिश की थी मोदी जी ने, वो नहीं हो पाया. आफ्टर लुकिंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ लीगल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, one can easily say that the trend has not been uniform throughout the world. So long as capitalism has stronghold, जब तक capitalism की stronghold है society पे, Henry Maine's theory holds good. But the moment the forces of capitalism will start withering away, there will be a counter move. There will be a contrary movement. In totalitarian states, जैसे मैंने आपको बताया, the freedom of contract is confined to narrowest limits. And Henry Maine's theory does not apply in those countries. तो यहाँ पे मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ आज. In the next class, we will discuss something else. दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है. आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज like the video, subscribe the channel and share the video with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.